बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है बच्चों। तो आए चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, व्हाट डज अ बाइट रिप्रेजेंट। इसका करेक्ट आंसर है अ सिंगल बाइनरी डिजिट 0 और 1। सेकंड एमसीक्यूज़ है, विच नंबर सिस्टम इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है बाइनरी। थर्ड एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 2। करेक्ट आंसर है इसका 10। फोर एमसीक्यूज़ है, व्हाट नंबर सिस्टम इज यूज बाय कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी। फाइव एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 1010। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। सिक्स एमसीक्यूज़ है, विच कोडिंग स्कीम इज यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन कंपाउंड। करेक्ट आंसर है ASCII। सेवन एमसीक्यूज़ है, वाई इज यूनिकोड इम्पोर्टेंट। करेक्ट आंसर है इट सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। एट एमसीक्यूज़ है, व्हाट टाइप ऑफ OS इज यूज टू टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन। रियल टाइम OS। नाइन एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग इन एन OS। करेक्ट आंसर है इसका टू डिसाइड विच प्रोसेस रन्स एंड व्हेन। 10 MCQs है, व्हाट इज द एप्लीकेशन पैच। करेक्ट आंसर है अपडेट टू फिक्स बग्स और इम्प्रूव सॉफ्टवेयर। 11 MCQs है, विच होस्टिंग टाइप इज मोस्ट स्क्रैपेबल। करेक्ट आंसर है क्लाउड होस्टिंग। 12 MCQs है, इफ अ कॉइन टॉस एंड डाइज इज रोल्ड, टोटल आउटकम आर 12. Third MCQ है, if all cats are animals or some animal are blacks, which is true. Correct answer is some cats may be black. 14 MCQ है, fitness mean algorithm must drop after finite step. Fifth MCQ है, which properties ensure which step is clear and unambiguous. So correct answer is definiteness. 16 MCQ, which of the following is an example of system software. Correct answer is Window operating system. 17 MCQ, which of the following is commonly used tool for data analysis and visualizations. Correct answer is इसमें Microsoft Excel. 18 MCQ, which HTML tags are used to create hyperlink. href. 19 MCQs, which does operating system use to process scheduling. Correct answer is to execute multiple process efficiently. 20 MCQs, which what will be the equivalent of 25 tens of. Correct answer is 11001. 21 MCQs, which of the following logical reasons type requires solving patterns and shape. Correct answer is non-variable logical resourcing. 22 MCQs, if a function calculating the average of three numbers but always returns 0, which type of error is likely causing this issue. Correct answer is logical error. 23 MCQs, which machine learning method is used for training without labeled data. Correct answer is इसमें unsupervised learning. 24 है, which of the following best explain the purpose of histogram. Correct MCQs है, it compare categorically data. 25 है, which cloud computing service model provides virtualized computing resource our internet. Correct MCQs है, इसमें बच्चों LAS infrastructures as a services. 26 है, which technology is used to both robot and AI personal assistants. Correct MCQs है, इसका correct answer है natural language processing. How can student help bridge the digital devices. Correct MCQs है, इसमें correct answer है promoting digital literacy. 28 MCQs है, what is the primary purpose of a data backup.
Correct answer है इसमें to recover lost data. 29 है how can graphics efficiently convey event detail. इसका आंसर है clear font, relevant image, key detail. 13 MCQs है which does bias affect the validity of research finding. इसका आंसर है leads to misleading result. 31 है which of the following in static website features. इसका करेक्ट आंसर है fixed content. Which CSS property controls spacing between element. इसका आंसर है padding. Inline CSS is written directly in HTML element using style attributes. 34 an array in JavaScript is used for. Answer is का store multiple value in one variable. 35 है what happen when a form is submitted. Answer है इसका data is sent in serve for processing. 36 है what why is splitting of HTML and CSS considered a good practicals. So answer है it improve maintain time and readability. 7 है बच्चों which is the role of submit button in the form. Answer है इसका to send from data to the service. 38 है which is the purpose of hover effect in CSS. Answer है to play style when the mouse is over an element. 39 है why are CSS classes used. Answer है to apply style to multiple element. 40 है बच्चों why is the border radius property used. Answer है to make element corner rounded. 41 है what is the event handling in JavaScript. Answer है responding to use action like click or key press. 42 है what is the role of DOM in JavaScript. इसका आंसर है representations of website structure and manipulations. 43 है which factor is mainly used to analyze algorithm efficiency. Answer है इसका time and space complexity. 44 है which method is used to add element at the end of the array. Answer है push. 45 है which is the main characteristics of the JavaScript array. Answer है dynamic size and can store different data types. 46 है what does the console log help developer do. Answer है इसका display value for debugging purpose. 47 है बच्चों why are unit tests used to JavaScript. Answer है इसका to test individual function or component. 48 है which type of error is detected during execution but not a complete time. इसका आंसर है बच्चों run time error. 49 है what are automated tested used for in JavaScript development. आंसर है इसका they rapidly tested code without manual effect. 50 है बच्चों why is debugging considered attractive purpose. Answer error are found, fixed and retested rapidly. 51 है बच्चों what types of data can data science work with. Answer इसका structured and unstructured data. 52 है बच्चों which of the following common data visualizations tool. इसका आंसर है बच्चों चार्ट ग्राफ. 53 है बच्चों what types of chart is best for showing threads over time. इसका आंसर है बच्चों टाइम चार्ट. 54 है what is the purpose of pie chart. तो इसका आंसर है बच्चों टू शो proportion or percentage of a whole. 55 है बच्चों why is data collection important. तो इसका आंसर है बच्चों if provide रे डाटा फॉर. तो बच्चों इफ व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन डाटा साइंस लाइफ साइकिल. इसका आंसर है बच्चों मोड डेवलपमेंट. 57 है व्हाट इज द लिटरेशंस इन द डाटा साइंस लाइफ साइकिल. इसका आंसर है रिपीटिंग स्टेप टू इम्प्रूव रिजल्ट.
58 what types of visualizations is the best for computing parts of a whole? It's considered a pie chart. 59 what modes model visualizations ensure, which is considered which is the model perform well on unseen data. 60 what is the key feature of load system? It's considered which is automation and real time data exchange. 61 what enables loads device to communicate? It's considered which is Bluetooth, Wi-Fi or internet connected. 62 है बच्चों which component is responsible for collection data in loads? इसका आंसर है बच्चों सेंसर. 63 है which component purpose and analyze for load data? तो बच्चों इसका आंसर है माइक्रो कंट्रोलर. 64 है what is the function of user interface in load? तो इसका आंसर है allow user to monitor and controls devices. 65 what is a blockchain? A design a designations data legal or translations. 66 है बच्चों what is the common load application in algorithm? इसका आंसर है smart irrigation system. 67 है बच्चों in which area of blockchain widely used to secure transmissions? तो इसका आंसर है बच्चों cytocurrency. 68 है बच्चों which is the blockchain in healthcare? तो इसका आंसर है बच्चों secure storage and sharing of patient record. 69 है what is the benefit of cloud computing? तो बच्चों इसका आंसर है बच्चों remote access to data and application. 70 है what is the wise reorganization mainly used for? इसका आंसर है बच्चों converting speech to text. 71 है which is the example of an LPE application? तो बच्चों इसका आंसर है chatbot and language translations. 72 है बच्चों what is the base in AI? तो इसका आंसर है बच्चों unfair or repredicted outcome due to data design. 73 है why is fairness important in AI system? तो इसका आंसर है बच्चों to ensure equal and treatment for all users. 74 है what should design do to reduce bias? तो बच्चों इसका आंसर है use diverse and balanced data set. 75 है why is pay as you go beneficially in cloud services? तो इसका आंसर है user pay only for resource they use. 76 है what is the limitation of speed reorganization system? इसका आंसर है बच्चों may misinterpreted word in noisy environment. 77 है which is an example of security threat? इसका आंसर है बच्चों malware attack. 78 है what is the regular software updating important? तो इसका आंसर है to fix vulnerability and improve security. 79 है why is technology addiction harmful? तो इसका आंसर है it can affect mental health, sleep and productivity. 80 है what is an effect of cyberbullying? तो इसका आंसर है बच्चों emotional stress and mental health issue. 81 है which factor most contributes to technology addiction? तो इसका आंसर है बच्चों reward based system. 82 है which are the hardware security method biometric log important? तो इसका आंसर है they protect physically access to device and data. 83 है which what is the main goal of cyber security beyond protecting? तो इसका आंसर है बच्चों ensure trust and reliability of a system. 84 है which is the why is the cyberbullying often more harmful than traditional bullying? तो इसका आंसर है it can occur anytime and reach widely audience. 85 है बच्चों what is the key limitation of quality research? इसका आंसर है it is subjective and difficult to generate.
86 है व्हाट इज द रिस्क ऑफ लीडिंग क्वेश्चन इन अ सर्वे। तो इसका आंसर है बच्चों दे इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्ड आंसर अनफेयर। 87 है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो इसका आंसर है बच्चों इजी टू एनालाइज एंड कंपेयर रिस्पॉन्स। 88 वाई इज मार्केट validations important before launching a product। तो उसका आंसर है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर। 89 है वाई इज फीडबैक क्रिटिकली ड्यूरिंग वैलिडेशंस। तो इसका आंसर है इट हेल्प इम्प्रूव एंड रिफाइन एंड प्रोडक्ट डाटा। 19 है व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ कस्टमर प्रोफाइल। तो बच्चों इसका आंसर है डी ग्राफिक एंड यूजर बिहेवियर। 91 है व्हाट मेक अ बिजनेस पिच स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों इसका आंसर है क्लियर प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड वैल्यू प्रोपोर्शंस। 92 है वाई शुड अ पिच इंक्लूड मार्केट रिसर्च। बच्चों इसका आंसर है टू शो एविडेंस ऑफ डिमांड एंड feasibility। 83 है बच्चों वाई शुड कस्टमर प्रोफाइल बी बेस्ड ऑन रिसर्च रेदर देन acclamations। तो बच्चों इसका आंसर है रिसर्च प्रोवाइड acute and reliable insight। 94 है वाई इज स्टोरिंग यूज इन पिचिंग। तो इसका आंसर है टू मेक द आइडिया इन एंगेजिंग एंड रिलायबल। 95 है व्हाट इज द रिस्क ऑफ लो डिजिटल लेगेसी। तो इसका आंसर है फॉलिंग फॉर मिसफॉर्मेशंस। 96 है व्हाट distinctions are digitally responsible use। तो इसका आंसर है यूजिंग टेक्नोलॉजी सेफली athletically and respectfully। 97 है व्हाट इज द रिस्क ऑफ collecting data without proper planning। तो इसका आंसर है बच्चों irrelevant और misleading information। 98 है why is reorganizing collected information important। तो इसका आंसर है to make analysis easier and more effective। 99 है why should outdating information be avoided। इसका आंसर है it may not affect current fact or thread। और लास्ट MCQs है वाई इज डिफाइंडिंग पर्पस इम्पोर्टेंट टू बिफोर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर है टू इंश्योर रेलिवेंट एंड फॉर डाटा कलेक्शंस। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको MCQ समझ आएंगे। इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और आगे शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।